We are not afraid of dying. سنوات على الحرب الصليبية على العراق. هذه الحرب الظالمة التي قادتها أمريكا ضد المسلمين وجمعت أوباشها من الدول التي دخلت الحرب وانضمت إلى الحلف الصليبي ومضت خلف راية الصليب وتشارك بأساطيلها وسفنها الحربية في بحر العرب وخليج عدن. الحرب وانضمت إلى الحلف الصليبي ومضت خلف راية. Get into position. Sniper detail. Take out the guards. Bravo team, move into position. Take out the lights. Taking out the lights. ओहो, फिर लोड शेडिंग। जाओ आगे जनरेटर चलाते आओ। I've got movement on the first floor. Hostiles moving downstairs. Sir, I can see a hostile coming out of the area. Switch to sniper scope. Switching to sniper scope view. Are you Mr. Lee Chen? My name is SP Ahtasham Khatak. You're safe now. Do you want me to take him? I want him alive. Hostiles going for hostage. Hostage is a kid, sir. Waiting for command. Kill him. Wama alayna illa al-bala. और बस हमारा काम था पहुंचा देना
चुपचाप सुन रहा, खामोशी से तन्हाई की दास्तां, बरसों से चुप ये खामोशियाँ, किस कदर अधूरी। What was the plan? To kill me and then treat me? You're not alone here, are you? आप तो इन लोगों के लिए हमेशा फरिश्ता बनता है, वरना इस कैंप के लोग तो दहशतगर्दी की वजह से अपना सब कुछ लुटा बैठे हैं। इन लोगों के ना तो घर बचे हैं, ना मवेशी, ना रोजगार, सब कुछ तबाह हो गया है। और हर रोज 500 से 1000 खानदान इस कैंप में आ रहे हैं। इतने ज़्यादा लोग आए हुए हैं और इतनी ज़रूरत है, और हमारे जो रिसोर्सेज थे वो कम हो रहे हैं, और अब बहुत ज़रूरत है कि इन रिसोर्सेज को बीफ अप किया जाए। प्यारा बच्चा, तो इनके फिर खाने पीने का, राशन का हाँ जी, सामान, इनको ड्राई फ्रूट राशन मिलता है। तो सामान इंशाल्लाह फिर आके यहाँ पहुँच जाएगा। खुदा शुक्रिया। हेलो जी, कैन आई स्पीक टू एजाज खान प्लीज? जी मैडम, मैं बात करवाता हूँ, आप प्लीज होल्ड कीजिए। मगर मेरा मशवरा तो यही है, क्या खान साहब की बात। सर, सोया मैडम का फोन है। Excuse me, gentlemen. Sorry. Hello? Hi. जी? Listen, I know you're busy, but I really need your help. वैसे भी आप अपने लिए तो कभी फोन करती नहीं, किसी और की मदद करनी होगी। I have to get the food and medicine trucks into the camps. Okay. It can't be done without government permission. I need you to get me that permit. मैं मुश्ताक को बोल देता हूँ, वो आपके साथ कोऑर्डिनेट कर लेगा। Whatever you need. Thank you. Am I seeing you tonight? Yeah. Okay. मैडम का कॉल आएगा, आप उनको जरा फैसिलिटेट कर। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। जी हजरात। शाह जी, हमें भी शुरू में इस डैम का आइडिया कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था, मगर बात आपकी और मेरी पसंद की नहीं है, मुल्क की है। चौधरी साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? ये रिवायात है, ये हमारे बुजुर्गों की मीरास है। मीरास को पानी में कैसे बहा दें? और ये कैसे मुमकिन है कि हम अपने वोट किसी दरिया या डैम के सपुर्द कर दें और असेंबली में अपने वोट गवा दें? एजाज मियां, तुम अभी बच्चे हो, लेकिन
तुम्हारा जज्बा काबिल कदर है, लेकिन हमारी पार्टी की पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है और हम कभी भी अपने बुजुर्गों की कही हुई बात से पीछे नहीं हट सकते। ये पार्टी, ये इज्जत, ये वोट सब उन्हीं का दिया हुआ। मीर साहब ये बताइए, क्या आप मुसलमान? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं, लेकिन मेरे मुसलमान होने का इन सारी बातों से क्या ताल्लुक है? शाह जी आप बताएं, आपके आबाओ-अजदाद क्या वो मुसलमान थे? नहीं, शायद नहीं। तो फिर आपके आबाओ-अजदाद ने अपना मजहब और अपना तहजीब और तमद्दुन क्यों छोड़ दिया? भाई मैं बताता हूँ। They knew it was an idea whose time had come. They knew it was the right thing to do, Shahji. And Shahji, you know this कि ये डैम बनना इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। Because अगर आपने आज ये डैम ना बनाया, तो आप लोगों के खेत, खलियान सब बंजर हो जाएंगे। कारखाने, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, लोग सड़कों पर आ जाएंगे। क्या ये तोहफा देके जाना चाहते हैं आप अपनी कौम को? क्या हमारे आबाओ-अजदाद यही चाहते थे कि हम अपनी आने वाली नस्लों को भूखा, नंगा और सड़कों पर छोड़कर चले जाएं? प्लीज अपने मुल्क के साथ गद्दारी मत कीजिए। ये डैम बन के ही रहे, इसका बनना बहुत जरूरी है शाह जी। Walaikum salam. Heard about your little incident. Mujtaba, you look terrible. Happy to see you too, sir. I see that civil life hasn't done much to your charming personality. Well, sir, I see your months of practice hasn't done much for your swing either, sir. Sir, what do you think? I should be happy about my little incident. Why can't you be straight for once in your life? Right, sir. I would like to know who tried to kill me. Is that straight enough for you? Look, we don't know. You worked most of your life in counterintelligence. 90% of the agency doesn't even know that you exist. Even if someone did, they'd realize your worth is more alive than dead. Sir, I need to know. Things are not looking good. Mujtaba, I've got a special team, and I want you on it. Sir, why don't you continue to practice? I'll come back in 10 years and see if you can score under par. Mujtaba, try to understand. I'm retired, sir. I don't do this anymore. When are you going to let your past go? तवानाई के बदतरीन शिकार मुल्क पाकिस्तान में लोग सिर्फ एक दूसरे पर उंगलियां ही नहीं उठा रहे, बल्कि एक ऐसे सियासी रहनुमा भी हैं जिन्होंने इस मसले के हल को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एजाज खान साहब। खान साहब, ये बताइएगा, लोग आपको इस मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम की उम्मीद समझते हैं, लोग मसीहा कह रहे हैं आपके पास इस मसले का हल क्या है? जी बिल्कुल भी नहीं, मैं कोई अकेला लीडर या मसीहा नहीं हूँ, बल्कि मेरी तो भरपूर कोशिश होती है कि मैं पाकिस्तान की पूरी लीडरशिप को साथ लेकर चलूँ, और जब ये डैम बनेगा तो ये पूरे पाकिस्तान की फतह होगी, ना कि सिर्फ एक शख्स। ठीक, लेकिन सर आवाम तो इस वक्त सड़कों पर निकल आए हैं, लोग जलाओ घेराव कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल को जहन में रखते हुए भी आपको लगता है कि ये डैम वाकई बन पाएगा? मेरा ख्याल नहीं जनाब, ये मेरा यकीन मुहकम है, और हर मुसलमान के लिए यकीन मुहकम होना ही उसकी सबसे बड़ी फतह। नहीं, एक मिनट सर, एक मासूमाना सवाल है मेरा। सर, यकीन मुहकम से तो डैम्स नहीं बना करते ना, इसके लिए माली वसाइल चाहिए होते हैं, मुशावरत चाहिए होती है, ये सिर्फ जज्बे से तो काम नहीं चलता सर। ये मुल्क किसी इंटरनेशनल फंडिंग से नहीं बना, इस मुल्क को पाकिस्तानियों ने बनाया, मुसलमानों ने बनाया, और अपने इश्क और अपने जुनून से बनाया, अपने खून से बनाया। आप सही कह रहे हैं कि हमें वसाइल की जरूरत है, हमें फंडिंग की जरूरत है, हमें एक्सपर्टीज की जरूरत है, लेकिन आप पाकिस्तान के लोगों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इससे पहले कभी भी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान के लोगों ने खुद फंडिंग अरेंज की हो।
At the Sham, stop it. I'm trying to watch the show. पाकिस्तान इकट्ठा कर रहा है और इंशाल्लाह अगले 3 माह में हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे। At the Sham, stop it. Fine, I'm sorry. There you go. Jeez, take it easy. Why can't you pick up your things and put them in the right place? I'm done mothering you. Pick it up. Stop being so lazy all the time. Lazy? You serious? See, 16 dead terrorists would like to disagree with you. The Chinese government would like to disagree with you. Such a show off. Oh shit. Hello? Where is your brother with you? Yes, he's right here. Get ready. Point Bravo in 15 minutes. Both of you. Sure, we'll be there. We? What do you mean we? There's a meeting at Point Bravo in 15 मुझे minutes. समझ नहीं आती मुझे इन मीटिंग्स पे बुलाते क्यों हैं यार? मैं फील्ड ऑपरेशंस का बंदा हूँ. मेरा क्या काम है इन मीटिंग्स पे? और ऊपर से मुझे बोलने भी नहीं देते. You know what? What? This time, I'm gonna speak. Right. I'm serious. You know exactly what boss is going to say, right? Yeah. He's gonna say, "Oh, Etisham, just try not to be yourself." Okay, let's go. Instructions for me, boss? Yeah. Try not to be yourself. Under control? You have nothing under control. तुम लोग अगर 1 मिनट भी लेट हो जाते तो लीचन की लाश टुकड़ों में मिलती. We would have been embarrassed before the best of our friends. हालात जंग में अब तक हमारे 40,000 पाकिस्तानी मारे जा चुके हैं. हमारी तर्ज जिंदगी, हमारी रवायात, हमारा दीन सब कुछ दांव पर है. Sir, with all due respect, these bad guys, why they're so successful? Because they focus all their energies on one target. They don't have to deal with the paperwork and the bureaucracy. They just plan and prep and execute. That's it. Thank you, Etisham. आप सबको रात के इस पहर बुलाने की ज़ामत इसलिए दी है कि we are facing an imminent threat. Abbas, could you please brief the council? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारी स्पेशल टीम ने एक कामयाब ऑपरेशन किया है. इस ऑपरेशन के दौरान 16 terrorists have been killed. Mr. Veria. The team also killed this man, Sanjay Bharadwaj, a first contact low-level raw operative. Sanjay ran a rice export business as a front from the Middle East, Europe, and Central Asia. Ever since his disappearance, he was nowhere to be found. Until now. Sir, our sources tell us that huge amounts of money is backing these operations, which means we are being outfunded by these organizations. But never outgunned, sir. Chatter from across the border and our intelligence sources indicate that a high-level independent contractor has been hired to carry out one of the biggest terrorist attacks in the history of Pakistan. And if our info is correct, then this attack would make the Marriott bombing look like a picnic. We also believe that this independent contractor may try to cross our border in a day or two. We've also prepared a short list of potentials. This man, Habib Al-Thani, aka Hamza, aka Ramo, tops our list. A serial killer turned terrorist for hire, expert in weapon and tactics, hand-to-hand combat. He's known to get in and out of any country he wants. Basically a first-class super operative. Well, with the number of people crossing the border every day, it's like looking for a needle in a haystack. It's probably of no use now, because if an operative like that wants to enter a country, he is coming.
what we are up against. I will have my team come up with a strategy, and we will stop these terrorists. जब आप अपनी मंजिल के इतने करीब पहुंच जाते हैं जिसके लिए आपकी सारी जिंदगी कंज्यूम हो गई हो, यू स्टार्ट टू वंडर व्हाट्स नेक्स्ट. कभी कभी तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम जो ये सब कुछ कर रहे हैं गलत है? We're a match made in heaven, don't you think? I have something so important to focus on. I managed to get everyone on the table. I'm this close to getting the dam built. Zoya, I've come to say goodbye.
You know what I think? I think you're full of shit. So fucking full of shit. We don't belong with each other. Wow, Ijaz Khan. Wow. That is just so convenient. All of a sudden, you want to become Mr. Hotshot fucking politician and you want to shed me like excess baggage. That's what it is, isn't it? Or is it because of your wife? Your self-righteous, bitchy wife! Wait, okay, look. I'm really sorry, okay? We can talk about this. And everything that I just said, I didn't mean it, okay? I'll be whoever you want me to be. I'll do whatever you want me to do, just don't do this. I'm sorry. When I heard about the attack on you, I was convinced that the attacker could be Rummel, for you were the first and only person who was able to penetrate his network and arrest him. Arrest him and hand him over to the law for what? So he can escape again. Where would that leave me now? The only law that I believe in now is the one I make with my clock. That law is the judge, the jury, and the executioner. I should have killed him that day. Look at you. What have you become? This blind rage and thirst for revenge? You think I don't know what you have been up to for the last 3 years? Whom do you think has been covering for all your mess? They got what they deserved. I know your pain, Mujtaba. Believe me, I know. But this is bigger than all of us. I'm offering you a deal. Help us. Help Pakistan. And I will give you a clean slate for the rest of your life. You can give me back my life. Now I know the reason why I'm alive. Ramal. And there's only one thing that stands between him and Pakistan. Me. So tell me, where is the bastard? We have reason to believe that Pakistan's going to be hit by a major terrorist attack. We also have reason to believe that the plan has already been contracted for and the executor is already here. And yet here we are, wasting our time with some has-been. So you know what'll be really nice? If you can stop focusing on yourself for a change and start focusing on the country. Because if this plan is as serious as we think it is, I assure you, it will be devastating. Where did you dig her up from? Ever heard of the FIA? I was the AD for the Special Investigation Unit. And now I'm the Chief Intelligence and Communication Analyst for the CDG team. Is there anything else? So that makes you a police officer. Aren't police and intelligence two different things? So our brains and army officers, aren't they? And yet here we are, trying to convince you of all the people to protect our country. Let me think about it.
आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं कि वक्त का तकाजा यही है कि अब हम अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर दें। ये नहीं होगा मौलाना, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। हमारे सरफरोश इस पाक फौज को जहन्नम रसीद करके दम लेंगे। जज्बात और हकीकत में बहुत फर्क होता है। क्या कर पाए हैं तुम्हारे सरफरोश अभी तक? पाक फौज के 6 जवानों ने तुम्हारे 700 लोगों को कुत्तों की तरह भगा दिया है। ये कारकर्दगी है तुम्हारे सरफरोशों की। तो क्या करें? हार मान लें, खुद को उनके हवाले कर दें? मेरा ख्याल है दोस्तों, हमें पाकिस्तान के अंदर और हमले करने चाहिए। अगर हम उन फौजियों को यहाँ शिकस्त नहीं दे सके तो क्या हुआ? हम उनको वहां शिकस्त देंगे जहां वो सोच भी ना सके। तुम क्या समझते हो कि जख्मी शेर कम खतरनाक होता है या ज्यादा? मौलाना साहब, तुम अभी बच्चे हो, बच्चे हो तुम अभी। मैंने जंगें तुम्हारी पैदाइश से पहले की लड़ना शुरू की हुई हैं। तुम्हें कुछ पता नहीं है बेवकूफ। मेरे भाइयों, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अभी आप अमन मुआहिदे पर मेरा साथ दें ताकि ये अजाब हमारा सर से उतर जाए। लेकिन मुल्ला नसीब, इस तरह तो हमको अपनी कार्रवाइयां रोकना पड़ेगी और हम पाक फौज के ताबे हो जाएंगे। इस वक्त हम अमन मुआहिदा पर दस्तखत कर दें और शहरी इलाकों में भी अपनी कार्रवाइयां जारी रखें। होगा ना? कभी कोई मौलाना साहब? तो फिर ठीक है, तुम एक दिन और सोच लो, फिर मिलेंगे। What are you doing out there? Ijaz Khan has been successful in getting all the politicians behind the dam. I'm sorely disappointed in you. All the years of training, all the efforts I've made to generate your cover, all of it is failing. Lakshmi, you came into my care when you were just 10 years old. I trained you and raised you as my own. You were my triumph, my swan song. Dada, I know I'm letting you down. Just tell me what to do and I'll do it. You're one of our best agents. You should know what to do. It is not just about the dam. If the people of that country realize their potential, the world shall no longer be safe for us. Don't worry, Dada. I will not let you down. शाम के रंग ढलते हैं, सोच में दिन ढलते हैं, दूर के गिनता हूँ फासले, कहाँ तुम कहाँ मैं, बादलों में बनते सिलसिले, रेत पे लिखे अल्फाज, शायद कुछ ऐसे ही
Do you smell a rat in here? You know, there are two ways of killing this motherfucking rat. The first one is to stab him right in the liver. And the second way is to cut the jugular vein 8 inches across its neck. Abort mission. Do you know that a man with a knife is quicker than a boy with a gun within 21 feet? Well, let me give you a lesson from my book. And my book says, God wins over evil in the end. You even breathe, and I'll blow your brains out. You know what? You're right. Let's talk. Let me give you two options here. You let me go. I give you all the money. I let you live, and you go back to your sweet life. Option number 2. You arrest me. I go to the jail. I come back. I kill you, your family, and I screw your life. Let me give you a third option, my friend. Why don't you go fuck yourself? Are you crazy? You almost killed your sister. The only family you have left. Well, at least I'm trying. Can't wait for practice. Do I make myself clear? Yes, sir. Major Mujtaba. I was told that you'd be joining us. मेरी धरती पे आगे बढ़ से याद रख कि तू खुदा तो नहीं. Shooters ready? Road and ready. ये जो लिखते बिकते तेरी मसम्मत तेरी नहीं. कैसा है हमें
I hope your journey was uneventful. Yes, it was. Can you get to Block 9C, Apartment 915? Yeah, I can. Remember, Samin's middle daughter's name is Rahila. Okay, so I've hotwired our communication routers with all major mobile networks. And my new program not only lets us listen into every conversation on every phone, but it also cuts down tracking and triangulating time in half. So all data scrambled when we say a secure line. It is. Major Mushtaba is the only person who has seen Ramal in action. He can identify him physically and also by his methods as well. So listen to him. If intel indicates that Ramal is already in the country, what do you think he's up to? An operator of Ramal's status and importance does not move until he has a clear target. And for that, he needs a lot of finance and a lot of planning. He would need to buy weapons, explosive, multiple identities. You tap the right criminal, and you get a lead on Ramal. जी कौन है? I've been sent by Jamal Khan. Samin's middle daughter's name is Rahila. Welcome, welcome. Please come in, come in. मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आपका सामान तैयार है। Tea, coffee, anything else? Nothing. Just a minute. ये रहा आपका सामान, आपका नया पासपोर्ट, माय कार्ड्स और पासेस। Everything seems to be in order. And now I believe that you have my payment for me? Of course. So you live alone here? जी हाँ, बिल्कुल. आज हमारे अजीम कायद की रूह हमारी अक्लो दानिश का दामन थाम कर चीख चीख कर हमसे पूछ रही है कि आखिर हम सब कौन हैं और क्या बन गए हैं। हमारी आईन की क्या हैसियत है जब हम धड़ों में बट चुके हैं। हम अपनी कौम को क्या मुस्तकबिल देके जा रहे हैं जिसमें अंधेरों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे हाथ में देखिए ये लिफाफे, ये वो लिफाफे हैं जो मुल्क के कोने कोने से गरीब नादार अवाम ने अपना पेट काट कर मुझे भेजे हैं ताकि डैम बन सके। ये वो लोग हैं जो ये चीजें अफोर्ड कर ही नहीं सकते। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट कर हमें
हमने अपनी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन की है। कौन है ये लोग? क्यों भेजते हैं ये सब कुछ? क्या समझते हैं वो कि इनके पैसे भेजने से मुल्क ठीक हो जाएगा? क्या ये लोग पागल हैं? क्या इनका दिमाग खराब हो चुका है? ये लोग सिर्फ इसलिए ये सब कुछ करते हैं क्योंकि टूट कर मोहब्बत करते हैं इस मुल्क की मिट्टी से। और सबसे बढ़कर वो ये चाहते हैं कि उनके आने वाली नस्लें जिस पाकिस्तान में पैदा हों वो एक आजाद और रोशन पाकिस्तान हो। They deserve better. आज कराची में एजाज खान की तकरीर ने उम्मीद की एक नई किरण को जन्म दिया है और कौम के दिल जीत लिए हैं। उनके तवानाई बहरान से मुताल्लिक ख्यालात बदल डाले हैं। उन्हें यकीन हो गया है कि अब तवानाई का बहरान खत्म हो जाएगा। सिराजा, मैं देख रहा हूं कि तुम दिन ब दिन बस से बदतर होते चले जा रहे हो। और तुम क्या समझते हो, मुझे खबर नहीं है कि तुम आजकल किन लोगों से मिल रहे हो बेवकूफा। ये जो लोग हैं ये सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। ये तुम्हारा कभी दोस्त नहीं हो सकते। कोटे सिक्के की तरह तुम्हें फेंक देंगे। खोटा सिक्का। इस दुनिया में सिर्फ एक करेंसी है मौलाना, और वो है ताकत। ये सब कुछ मेरा दिया हुआ है, मेरा। और जब मैं चाहूंगा, जिस वक्त चाहूंगा, एकदम छीन लूंगा। ताकत वो भी आपकी दी हुई? ये तो मौलाना आप बहुत पहले खो चुके। अब ये ताकत मेरी है, मेरी। मैं आज से आपका गुलाम हूँ। मुझे अपनी गुलामी में लीजिए, मुझे अपनी गुलामी में ले लीजिए। मौलाना, ये आपने मुझसे क्या करवा दिया? तुम इतने परेशान क्यों हो? बाप तो मेरा था। जब तुम्हारा मारना होगा ना, मैं मार दूंगा।
आप टाइम की बहुत पाबंद हैं। अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। ये मुल्ला के पैसे हैं। तुम्हारे अकाउंट में पहुंच चुके हैं। चेक तो तुम कर ही चुके होगे। कर चुका। कम से कम 8 लोग होने चाहिए। 2 से 3 औरतें हों तो काम और भी आसान हो जाएगा। हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मगर वो कब होगा जो हम चाहते हैं? Why was Mujtaba using my secure station? He's not authorized to. It's a violation. I authorized him. We've got bigger problems to deal with. So get on with it. Let's see who this Mujtaba really is. Yeah. I need an important favor from you. I don't do favors. In my line of work, You never deviate from the original plan. Well, in the grand scheme of things, our plan won't have any effect if this is not done. And besides, this extra little effort can make you $5 million richer. If we do this, we do it my way. Deal. जी मिल गए थे। कहिए क्या होगा? क्यों नहीं, हम तो पैदा ही आपकी खिदमत के लिए हुए हैं सरकार। आखिरत को छोड़िए, जब आएगी तब देखा जाएगा। आप मेरी
की फिक्र करें। बखैर बखैर तरखाना बखैर। मौलाना, आपके वालिद का बहुत अफसोस हुआ। आप सुनाइए, कैसी गुजर रही है? और ये टेलीफोन पे आप किससे लगे हुए थे? किसकी शामत आने वाली है? बस हैं हमारे कुछ दोस्त जिनको कुछ लोगों से शिकायत है और हमें ये शिकायत दूर करनी। मैं कुछ समझा नहीं। बड़ी आसान बात है। अगर दो मुल्कों की आपस में नहीं बनती और वो ये जंग भी नहीं लड़ना चाहते तो यहाँ पर ये जंग बड़ी आसानी से लड़ सकते हैं। खूबसूरती की बात तो ये है कि मरेंगे बेचारे पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी वो कौम है जिसके मरने का किसी को कोई अफसोस नहीं, खुद उनको भी नहीं। वाह मौलाना वाह, क्या बिजनेस ढूंढा है आपने। अरे बिजनेस तो बहुत पुराना है। वो बाहर दुकानें नहीं होती जिन पर सब चीजें मिलती हैं। क्या कहते हैं भला उनको? वन स्टॉप शॉप। वन स्टॉप कैसा चल रहा है क्या हुआ रास्ता? आप और आपके नन्हे फरिश्तों की वजह से जबरदस्त चल रहा है। इतना मुनाफा तो हमने कभी नहीं कमाया था। बाकी पैसों के लिए मुझे ट्रक चाहिए होता है, इसलिए पिछली बार की तरह मैंने सारा पैसा आपके बाहर के अकाउंट में ट्रांसफर करा दिया है। और वो जो सामान आपसे मंगवाया था? मौलाना, देखने में ये कुछ नहीं लगते, लेकिन ये केमिकल्स अगर ठीक मिकदार में मिलाए जाएं तो पूरे इलाके के लिए ये 2 ड्रम्स काफी हैं। Bad dream? Coffee? Thanks. Didn't think you could smile. You know, about the other day, I think we started off on the wrong foot. I was just wondering if you'd like to press the reset button. Sure. Hi, I'm Javeria. Mushtaba. Yeah, I know. Do you want to work on Hamid Khan's case evidence? Sure. Come. Great. I have a confession to make. What? I went through your files. I know about your pain and I know how you feel. I've been through it. Look, I don't need no sympathy, right? That's not what I meant. I just needed you to know that if you ever want to talk about something, I'm right here. प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का बहुत शुक्रिया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी वजह से नहीं गई थी, बल्कि उस नेक मकसद के लिए गई थी जिसकी जंग आप लड़ रहे हैं।
this phone call. Please, don't be like this. जो जी मैं G. Thank you so much. पहुंच चुके। हाँ। जी जी। शाह साहब जरा मैं आपको दोबारा वापस फोन करता हूँ। जनरेटर चला दो भाई। मेरी जरा लाइट चली गई, इसीलिए मैं कहता हूँ इस मुल्क में डैम बनाने चाहिए, ये बिजली का मसला तो ना हो। I know मेरी जान कि मेरे कोई भी अल्फाज इस वक्त किसी किस्म के मायने नहीं रखते। I know कि तुम किस कर्ब से गुजर रही होगी। But please try to understand, एक दफा ये डैम बन जाएगा कि उसके बाद मैं अपना सारा वक्त तुम्हारे और अपने बच्चे के साथ गुजारूं। Okay? So everything's settled. I'm gonna freshen up और उसके बाद हम बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे। तो it's all set then. सभी से यू वास्ता सब पिघल के खत्म हो है नियम ये सख्त जो जहाँ उधार की लौटानी है किसको क्या पता। आकाशा है ये चीना सा पर बस लेके
Ijaz Khan was a good man. A true leader. Someone our country really needed. Shit like this happens. The wife was killed with this cut on her throat and Ijaz Khan with a stab wound to the side of his abdomen. A perfect 8-inch cut indicates a very steady hand. The stab wound of Ijaz Khan indicates a very sick mind. The killer didn't want him to die instantly. He wanted him to suffer. You know who else uses this kind of torture? Who? Brahma. Sad. All three of them are just gone. 3. What do you mean 3? She was pregnant. Why does it have to be children? I don't understand how someone can be so heartless. Don't worry about the next package. I'll deliver the aid myself. I know, but I don't want any of you there. It's too dangerous. I've got an MP5 assault rifle pointed right at you, and I'm a surgeon with it. Can I have my last cigarette? How long have you been here? You look different in pictures. I didn't come here for compliments. I need to get to my target. We've worked on that already. You leave first thing in the morning. Your work on Ijaz Khan was very useful. Thank you. You could have been a little less dramatic, though. Well, I told you. I'll do it my way. We need to finish what we started, sooner than later. I need to finish my bomb. At least a day ahead from schedule. I can't trust your monkeys with the chemicals. My monkeys and those little angels are the reason we've been so successful. Do not underestimate the Pakis. They have the capacity to surprise. They've been a pain in your government's ass since some time. If it wasn't for us, you would have not been so successful in your operations. True. So what do you propose we do? We need to divert their attention somewhere else. Arrangements for that have already been made. So I hear. So where's the body at? The police academy.
वालेकुम। वालेकुम जी। ये बीवी है मेरी, पेट में दर्द है, अस्पताल लेके जा रहे हैं। हेलो नुजरत, नुजरत आए आप? क्या हेल्प कर सकते हैं? आओ। चाचा जी बॉल भी ये पकड़ा दें जरा। चाचा जी प्लीज बॉल पकड़ा दें। क्लियर। मुबारक हो। मुबारक हो। You think I'm crazy, but I'm not. When I close my eyes, the lights go off. Lie awake in my bed, your secrets in my head. You think I'm crazy.
Lakshmi, I hope you have some good news for me. Yes, sir. Turn on your TV, and all you're gonna see is chaos. You have kept my confidence. I am proud of you. See how effective I am? There is no room for complacency. Our ultimate goal still remains to be achieved. So make sure our friend reaches his destination. His getting there safely and getting out of there is pivotal to the mission. And what about that extra 2 million I asked for? My triumph, my swan song. You shall get it. Thank you, sir. एक अहम खबर है लाहौर से, जहां पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया है और उसके नतीजे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक कम से कम 100 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि हमला कुछ ही देर पहले किया गया है और पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर दो खुदकुश हमलावरों ने What do you think? धमाके से उड़ा दिया है। Well, I've had better. About the news. I'm so turned on. They've arrested two spotters. Apparently they were coordinating the attack. Good, I would like to have a chat with you. Bring them to the investigation room now. I have a feeling this is going to be way more than a chat. These bastards killed 100 men today. That's 100 families, Javeria. And those who were alive, who wish they were dead too. We are not afraid of dying. You cannot break me. You gotta love Nadra, by the way. It's not her. It's the database, Mr. Jamal of Chuck 37. Now I know who you are, where your family lives, He shouldn't have tortured him like that. etc., etc. So here's the deal. To make an omelet, you have to break some eggs. You tell me what I want to know, and I'll let you and your family live. Not only that, I'll take your family out of this country to a safe place. Sounds good? I'll die before I help you. Fair enough. Let me put it to you this way. You are two people, and I only need one. This will help you think better. You are a police officer. You cannot do this to us. We are Pakistani. I'm not a policeman. And you are not a Pakistani. I'm your worst nightmare. And if you ever call yourself a Pakistani again, I'll reduce you to such pain that you can't even fucking imagine. You understand? You know, I tried to reason with you and give you an opportunity to express yourselves, but I guess that's not happening, right? So I'll move to the next step. Yeah, it's Asham. Sir. I want you to take your team and go to Chuck number 37. There's a house there. This house is owned by a guy named Maulvi Abdullah. Yeah, the family consists of 5 people, 2 females, 3 males.
The younger one's Reena. Shoot her first. Then there's little one Famida. Just kill the whole family, and I don't want any traces. Right? Listen, no. Just wait, no. wait. I'm talking, okay? Just don't leave any traces. Listen okay? to me. You cannot. No, no. Listen. No, please. Too much noise. You were saying. Is he crazy? Did he just kill him? No, he knew exactly where to shoot. Okay. I'll tell you everything. Hold on. Yeah. We worked for Mullah Siraj. Thank you, gentlemen. Oh, sorry. Thank you. Assalamu alaikum, sir. What is its location? Raghazi Fort, sir. हमारी कोई भी सिविल आर्म्ड फोर्स या पुलिस उस इलाके के करीब नहीं. I think we need to bring the army on this one, sir. How many men do you think he has over there? Safe estimate, sir. About 800 heavily armed men, sir. I will speak to General Janjua. You would need to debrief the commanders on ground. So we would like to do more. We would like to fight as well, sir. तुम लड़ोगे मगर सिर्फ इसलिए कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो और तुम्हारा काम सिर्फ मुजरिम को कानून तक पहुंचाना है. Go and do your job and make this country proud of its protectors. So, where's my stuff? Everything is ready. But would you like some rest before you start your work? I have made arrangements for you. There's no time. And the police academy drama won't last for long. It is not possible. None of my men will be taken alive. I don't take any chances. Show me the way. Follow me. जनाब, ट्रक तैयार है. जनाब, ट्रक तैयार है. जनाब, ट्रक तैयार है. जनाब, ट्रक
Sit down. Relax. It's all right. It's all right. All right. Thanks. Thanks. It's all right. It's all right. मेरे भाइयों, चंद दहशतगर्दों ने हमारे 80 सिपाहियों को शहीद किया, 104 को शदीद जख्मी किया, 184 खानदान उजाड़ दिए। मैं खुद एक पुलिस वाला हूं और खुदा गवाह है कि मेरी रूह तड़प रही है अपने साथियों का बदला लेने के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने आप सबकी तरह इस धरती के कानून की हिफाजत की कसम खा रखी है। मेरे लिए वो दहशतगर्द नहीं है, मेरे लिए वो सिर्फ मुजरिम है, इस पाक धरती के नापाक मुजरिम। वो ये समझते हैं कि ये वतन लावारिस है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस सरजमीन के सिपाही अभी जिंदा है, इस पाक धरती माँ के बेटे अभी जिंदा है। तो क्या कहते हो सिपाहियों? बता दे उन्हें कि इस पाक धरती की तरफ मेरी नजर से देखने वाले का क्या अंजाम होता है। बता दे उन्हें कि ये रात उनकी आखिरी रात है। ऐ खुदा, हमारी वफा के गवाह रहेगा। नारे तकबीर! आज की शाम में कुछ है। तुम लोग अपनी पोजीशनों का ख्याल रखो। हम पदे थमखू। I've located the ammunition dump. This might be big. किसी को नहीं छोड़ूंगा, कुत्तों से भी बदतर मौत दूंगा तुम्हें। और यहाँ खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जाओ लेके आओ हरामजादे में से किसी एक को।
आएगा इस जंग का। ओके ना? Night Stalker, this is Shaheen 1. Come in, Night Stalker. Shaheen 1, this is Night Stalker. Grid reference 6430999. Engage target in 60 seconds. Over. Roger that, sir. Approaching target in 60 seconds. You boys are not scared, are you? Stay close to me and follow me. आओ फौजी आओ। तुम जीत कर भी हार चुके हो और मैं हार कर भी जीत जाऊंगा। तुम कुछ भी कर लो, इस मासूम बच्चे की जान नहीं बचा पाओगे। उधर से तुम मेरे सर पे गोली मारोगे और इधर से सराज, अमल कहाँ है? जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तो कब का जा चुका। In that case, अपने हथियार फेंक दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। किस कानून के? पाकिस्तान के कानून के? मैं नहीं मानता इस कमजोर मुल्क के इस कमजोर कानून को। ठीक है, तुम जीत गए।
Ramal was here. He made 2 bombs. One was chemical and the other was explosive. There is a binary liquid. Combined properly, it creates one of the most effective explosives on the planet. How much damage do you think it can do? Around 2 kilometers. Go through the fort very carefully. I think I found one of your bombs. And it's ticking. 4 minutes. Is there a way to defuse it? Can we defuse it? Negative. Not in the time we've got. Hello? 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 सरज़मीन शाद ईश्वरे हसीन शाद तू निशाने अज़्मे आलीशान हर से पाकिस्तान You're gone. And you left me all alone. Everybody else wanted to be doctors and engineers and pilots, but no. You had to be a police officer. I was wanting to protect the weak, and you did. But what about me? What about me? The essence of who we are is our ability to bear immense amount of pain and loss. Mujtaba, you have never been a stranger to this.
miss you. I miss you so. You need to pick yourself up. We still have one more bomb to find, and Rummel is still out there. Not for long, sir. Not for long. You take all your pain, anger and frustration, you turn it into this fire of hell. The fire which burns anything and everything that's given you pain. And you give them pain. You hurt them. So all these years, this is what you've been doing? He was a good kid. He was a really good kid. Coffee? Thanks. What are you working on? Isn't his bomb already destroyed and the entire network disbanded? कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में आज वजीर आजम पाकिस्तान तशरीफ लाने वाले No, if Ehtisham was alive, he'd be right there, supervising the security. खारजा पॉलिसी बयान करेंगे। कहा जा रहा है कि नई खारजा पॉलिसी सामने आने के बाद पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। It is indeed an honor for me to be invited here to share my thoughts with you regarding the new foreign policy of Pakistan. We shall no longer take dictation from anyone. Now it is time for me to make some announcements for the future of country, to the future of our country. This will not only increase our revenue by $20 billion, but it will also usher a new era.
209. I think the bomb is there. Okay, you go after Rommel. I'll find the bomb. All right. Mujtaba, be very careful. He has nothing to lose. Both are the same. So why fight? There are two paths, good and evil. I follow the good path. And as the good book says, good wins over evil in the end. But in my book, evil wins in the end. I guess you're reading the wrong book. I'm going to kill you today, Mujtaba. The way I killed your family. You just didn't kill them that day. You killed me too. And what you see today in front of you is a dead man. And you can't kill what's already dead. I've waited for this all my life. Death is a 5-letter word, Rommel. But I promise you, today I'm going to make it very long. Painful for you.
आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें, अभी ये खबर मौसूल हुई है कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के हमले को नाकाम बना दिया गया है। आपको ये ताज़ा तरीन खबर दे दें कि इस्लामाबाद दिया गया है। इसराइल इत्तलात के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। दूसरी तरफ आपको एक अहम खुशखबरी ये दे दें कि हरदिल अजीज सियासी रहनुमा एजाज खान के हमसे बिछड़ने के बाद उनका ख्वाब पूरा हो गया है। आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम सियासी जमातों ने डैम बनाने की मंजूरी दे दी है। आज कॉन्फ्रेंस में तमाम सियासी जमातों ने I'm sorry it has come down to this. You know, in our game, failure is not an option. Goodbye. As long as the history is being written by the hunters, lions shall never be glorified. We will never know how many we have lost to this plague of terrorism. But we do know now how many we have to save.